So no plans to open. See an inside bar. So I do want to take this. If again, if there is a after open, there is a good risk reward, I'll take it in either direction. What did I do today? Flat closing. Didn't trade Bank Nifty. Both Nifty, Bank Nifty again did not really have good volume structures. Nifty gave us system trade, which is sell below 1, did not trigger. So interesting part is in Bank Nifty and Nifty both. Yesterday's low has not broken. In Nifty, it is not even broken 880, 780, 19780. So that is the reason in this inside bar, I will be a bit hesitant of taking a short trade, considering you have a 20 moving average which can act as a resistance. So let's see. I will probably after the inside bar trade is taken or not taken, I will also look to take a trade based on this, keeping previous day as stop loss and up move if it comes near this and 1 hour closing is above previous day low. So yeah, that could be a good opportunity to buy. Thank you. मैं निफ्टी में सुबह कोई प्लान था नहीं आज. अब देखा जाए तो इनसाइड बार बनाया तो मैं मोस्टली इसको ट्रेड करूँगा अगर अच्छा आर मिला तो. बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 3 मिनट्स में कोई वॉल्यूम स्ट्रक्चर्स नहीं थे और 1 o'clock के नीचे मैंने सेल दिया था सिस्टम ट्रेड जो कि ट्रिगर नहीं हुआ. अब कल मैं क्या करूँगा, जैसे मैं चाहता तो हूँ कि ऊपर की तरफ टूटे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले मुझे इसको ऊपर की तरफ खेलने के लिए, पर देखते हैं. अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने आज कल का लो नहीं तोड़ा और निफ्टी में भी कल का लो नहीं तोड़ा. कल का लो तो दूर की बात है, 780 760 ये सब लेवल्स भी नहीं तोड़े जो कि कल के बेसिकली एक तरीके से पुल बैक्स थे. तो देखते हैं कल कैसे ओपन होता है. अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली अच्छे आर से जिसमें प्रीवियस जो लो स्टॉप लॉस है तो मैं पक्का बाय करूँगा इस ट्रेड को लेने के बाद. थैंक यू.